Welcome back, dear students. Welcome to lecture second of our continuing course on environmental engineering. In the first lecture, we discussed about the sources of water, some introductory concepts with regards to water supply engineering, and we also discussed what is the weightage and how important is environmental engineering for your GATE preparation. Myself, Dhruv Saxena, your course instructor for this subject. So let us begin with our today's topic. So first topic for today is to understand what is the design life of different units in raw water scheme. I won't be going much into detail because as a GATE aspirant, the things which are more important we'll be discussing only those in these lectures. Okay, so this is required for your understanding, for a remembrance while you solve some numericals. Okay, so for that we'll develop some understanding. So let us start. Please take out your notebooks if you haven't. So what I'm drawing here is the pipe network right now that consists of different units that are as a part of raw water supply scheme or the water supply scheme, drinking water supply scheme in different terms we can say. So here, as you can see on the screen, we have the source of water. It may be surface source, it might be groundwater source. Okay, now on the top I'm mentioning the design life. Okay, what will be the design life of different units, and from this line I will be starting it. Okay, so what is the first thing? If you can recall, the first thing I discussed is the installation of intakes which are nothing but concrete structures that are used to pump the raw water from the source to the treatment plants. Okay, so we install pipes, we install pumps at various locations. Okay, we pump the water to the water treatment plant. Here different processes are carried out and water is treated for desired qualities. Next, we transfer this treated water into service reservoirs. And finally, through these service reservoirs, through a network of pipe, this water enters into our distribution system. Okay, this is our community where the distribution has to be carried out. So I'm writing it as distribution system. We'll be also learning about different types of distribution systems. These type of questions may be asked in your other exams, competitive exams such as SSC, JEE, state level exams. They can ask you about the different characteristics of different types of systems. So let us first finish this one. I'm really sorry for the glitch. Yeah. So talking about design life, the source or the surface is chosen such that we are able to extract the water for at least 50 years. Okay, then whatever pipes we install in such a way that the design life is at least 30 years. We plan it in such a way. We install and design pumps for a design life of 15 years. Similarly, all the pipes we design for are about 30 years. After the design life, they might be replaced with bigger pipes as per population or some other pipes or maybe new pipes, because with time they also deteriorate.
Then your water treatment plant, this is designed for about 15 years. Okay, your service reservoirs are designed for another 15 years, and your distribution system, that is the water carrying pipes from the pipes carrying water from the service reservoir to the distribution system. The distribution system mainly consists of all the residential areas, all the public areas, industries, basically all and everywhere wherever we need water for our use. Okay. Now, for those who are new to this subject, you this term might be new for you. Service reservoir. Let us quickly have a look why what we mean by service reservoir. See, when we fetch the water from the source of water, we take it directly to the water treatment plant, and once the water treatment plant is the treatment is carried out there, we need to transfer it to the users or the consumers. Okay, but just imagine about your city. Okay, like right now I live in Ajmer city. Now if at water treatment plant the water is treated in such a huge amount, will it be possible to take that water and pump it to all the users individually? It is economically not feasible. It is not a very practical idea. Okay, so what it is being done, that we build some tanks. These tanks may be elevated from ground level. You must have seen some water tanks. पानी की टंकियां अपन हिंदी में कहते हैं, बड़ी बड़ी टंकियां आपने देखी होंगी, जिनको अपन इंटेस्ट टैंक भी कहते हैं. कुछ इस तरीके का शेप आपने देखा होगा. ये आपका ग्राउंड लेवल होता है, और आपकी कुछ ऐसी पानी की टंकियां आपने देखी होंगी अपने शहर में. These are water tanks, elevated or ground water tanks. The water is filled into these. It also acts as a buffer. मतलब कि जब भी पानी की जरूरत हो, या अपन ने डिस्कस किया था कि सुबह से लेके शाम तक विद इन 24 आवर्स डिमांड ऑफ वाटर वेरीज. So depending upon the varying water demand, we can supply it accordingly from this buffer storage. हिंदी में एक बार मैं अपने स्टूडेंट्स को थोड़ा बेटर अंडरस्टैंडिंग देने के लिए, अपन एक बफर यानी कि एक कुछ पानी जैसे अपन ऐसे रखते हैं कि जब भी जरूरत पड़े तो अपन उसको उसी टाइम पंप कर सकें. तो अपन इन पानी की टंकियों से दिन के डिमांड के हिसाब से अपन आगे कंज्यूमर को सप्लाई करते हैं. ओके, सो ये सारी चीजें कुछ हो गई आपकी with regards to the design life of various items of or different units of the water supply scheme. We'll be also learning about service reservoirs, how the calculation is done for them at a later stage whenever the topic comes. Okay, for now let us focus on the distribution system. Now we will be discussing about the various types of pipes. Various types of pipes used in raw water scheme. It will be very nice of you if you all can also take notes along with me. Okay, and in case you are not able to take notes, I will be sharing these notes on our Telegram channel. The link for which is given in the description box. Please go to the link, join the Telegram channel. We will be providing class notes, we will be providing assignments, we will be providing some question banks based upon previously held papers. All the reference material and other things will be available at the Telegram channel. Okay, please join it. So first we have cast iron pipes. See, as a GATE aspirant, first of all we need to understand why we are studying this topic. There are only two reasons. One, it is given in the syllabus. Second, it has been asked or it might be asked in some of the objective papers or any competitive exam. Okay, so regarding pipes, there are different types of mainly 5 to 6 types of pipes. We will be discussing those 5 major pipes, where they are used, what are their advantages and disadvantages,
and in which unit or at which section we prefer which type of pipe. Okay, so these are some things that we'll be considering and learning about it. Okay, so first of all we have cast iron pipes. Now where they are, the most important thing about them is that these pipes are resistant to corrosion. Okay, up to a reasonable extent. Since it is directly a cast iron, so it will definitely get corrode, it will get rust, but up to a certain extent it can resist. Okay, these are highly durable in nature and they also possess a very long life. Okay, so let us quickly write these basic points. These pipes are resistance to corrosion, up to a reasonable limit. Okay, these are highly durable and also possess long life. Okay, now another feature about them is then they can take a huge amount of compressive force. Okay, but they cannot take much of tensile force. Now what does this mean? Like this is a pipe. Okay, it can take a huge amount of compressive force. That means it can take a huge, this type of forces whenever they act. These pipes will be able to take a lot of such forces. Now just try to visualize where these pipes will be used. Where will we install it? Let us consider this diagram. Now you must have observed also in your daily life, whenever we have to carry huge amount of water through underground. Okay, or maybe let us say there is a heavy traffic flowing over that surface wherever those pipes are laid, or there is some heavy load, there are buildings or maybe anything. So we need some pipes that are resistance to corrosion, and they also should have compressive load carrying capacity which should be high. So these pipes carry it. Okay, these pipe possesses those characteristics. So these pipes we prefer as distribution mains. Okay, in the distribution system here we use CI pipes. Okay, or cast iron pipes. Now a direct question might be asked to you that what type of pipe or which material of pipe is used as distribution mains. Okay, so with this you can directly fetch some marks in your any of the competitive exams. Okay, let us move ahead. The second one to discuss is steel pipes. Okay, now these pipe can take high pressure. Okay, let us draw some a simple diagram here. Whenever we say high pressure, we talk about the internal pressure. Okay, whenever we talk about compressive load, that is a load acting upon that pipe from the outside. So these pipes, they can take high pressure but at the same time they cannot resist heavy compressive load. They cannot resist heavy compressive load. Another feature about the steel pipes is about their weight. These pipes
are light in weight. Okay. Now, how this will be useful? This is the main important feature about this. Let us quickly go to this diagram. Now, where will we will be requiring pipes that are light, where we wish to transport it from the city area. What will be those locations? They might be these particular areas from where the water is being pumped. We need to lay these pipes around that surface source or a groundwater source. We need to pump it to that water treatment plant. The water treatment plant might be far away from the source. It might be in middle of somewhere, or generally it is near the city. Okay. So but we need to pump a huge amount of water and we need to lay pipes. So we need pipes that are durable, that they can take pressure of huge amounts, and which are also light in nature, so that they can be easily transported. So steel pipes have these characteristics. So we use these steel pipes as pumping mains, that is in this area. These are the pumping pipes. Okay. So we can write this point. These pipes are used in pumping mains. Let us move to the third one, that is GI pipe or galvanized iron pipes. Now, where are GI pipes used? These pipes are mainly used where we need to transport or carry some acids or alkalis or any of the fluids which may be of very high temperatures. Okay. These are mainly used there. So let us quickly write these two features, important features about them. Galvanized pipes can resist the action of acids and alkalis. Dear students, I hope that my handwriting is clear to all of you. If any of you face any issue with handwriting, then please do post in the comment section. It will definitely help in improving my writing in the next lecture. Okay. Next is that they can take action of, or let us write it in the similar fashion, they can resist action of high temperature fluids. So they might be used in some chemical industries or thermal plants. Okay. Let us discuss the next one, that is reinforced concrete pipes or RCC pipes. Now these pipes are highly resistant to corrosion because they are made of concrete cement. Okay. They can take heavy compressive loads, they can take heavy tensile loads as well, heavy pressures as well. Okay. But overall their durability is much less when compared to cast iron pipes. Okay. And hence they are not used in raw water supply scheme. Instead they are used very well in the wastewater uh, transfer mechanisms or transfer units. Okay. When we will be studying about wastewater treatment, we'll learn that there we use RCC pipes. So let us quickly write about them. These pipes are resistant against corrosion,
they can take both compressive loads and heavy pressure loads. Okay, another feature that their durability is relatively less and hence not used in raw water schemes. The last one that we'll be discussing in today's lecture are asbestos pipes. Now these pipes, they are resistant against corrosion, they are light in weight, they are highly flexible, and thus whenever we use asbestos pipe, we don't require any of the joints. Okay, आपने देखा होगा कभी आपके घर पे या कहीं पे भी आपने प्लम्बिंग का काम होते हुए देखा हो कि कैसे पाइप्स फिट होते हैं, कहीं वीडियो में देखा हो, कहीं भी आपने ऑब्जर्व किया होगा ऑब्वियसली डेली लाइफ में, तो आपने देखा होगा देर आर नंबर ऑफ जॉइंट्स दैट आर यूज्ड, एल जॉइंट, टी जॉइंट, देर आर नंबर ऑफ जॉइंट्स, but asbestos pipe are flexible in nature and hence we don't need to provide any joint for them. Okay, so let us quickly write about these also. Asbestos pipes are resistant against corrosion. अलग अलग नीड के हिसाब से अलग अलग पाइप्स यूज होते हैं. अपने को बस ये याद रखना है कि कौन से वाटर सप्लाई में यूज हो रहे हैं, किन के क्या एडवांटेजेस हैं, किस में यूज होते हैं, पंपिंग की तरफ यूज हो रहे हैं रॉ वाटर सोर्स से पंप करते टाइम, या फिर यूज हो रहे हैं डिस्ट्रीब्यूशन मेन्स में, कौन सा पाइप कहाँ यूज हो रहा है. इस टाइप के ऑब्जेक्टिव सवाल अपन एक्सपेक्ट कर सकते हैं किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में. वहां पे आपके साथ क्या होता है, बहुत सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, 100 क्वेश्चन, 150, 200 क्वेश्चन. मैं गेट की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं दूसरे एग्जाम्स की बात कर रहा हूँ. तो वहां पे ऐसे टाइप के क्वेश्चंस भी आपसे पूछ लिए जाते हैं. सो यू शुड बी प्रिपेयर बाय ऑल मीन्स. Okay, so that's all about pipes. Next topic that we'll be discussing is types of valves. क्यों पढ़ रहे हैं अपन वॉल्व्स के बारे में, मेन पर्पस क्या होता है वॉल्व का. मैं एक बहुत ही सिंपल एग्जांपल लूं. डेली आप यूज करते हो टैप, आपके घर में लगा हुआ पानी का नल, क्या काम है उसका, क्या पर्पस है, चालू बंद करना. इसको अपन कैसे टेक्निकली बोल सकते हैं, रेगुलेट फ्लो ऑफ वाटर. ठीक है. अब वाटर सप्लाई स्कीम में अपने पानी की क्वांटिटी भी बहुत ज्यादा है, ओवर अ लॉन्ग लेंथ अपने को वो कैरी करना है. तो अलग अलग तरीके के अपन वॉल्व्स यूज करते हैं जिनके अलग अलग फंक्शंस होते हैं. तो एज अ वाटर सप्लाई डिजाइन इंजीनियर यू शुड नो अबाउट इट. यही चीजें आपसे बाकी के काफी एग्जाम्स में टेस्ट कर ली जाती हैं. सो लेट अस डिस्कस द फर्स्ट वन. ये इसके नाम आप याद रखिएगा. ऐसे तो गेट वॉल्व बोलते हैं, स्लुइस वॉल्व बोलते हैं, ठीक है. तो ये दोनों सेम ही होते हैं और इसको शट ऑफ वॉल्व भी बोलते हैं. ओके, गेट वॉल्व, स्लुइस वॉल्व और shut off valve. Okay, again these valves are used to regulate the flow of water in system. Okay, so let us quickly write about it. We'll also understand where different valves are used.
These walls are used to regulate the flow of water in system by dividing it into number of sections. जैसे आपको पानी डिस्ट्रीब्यूट करना है इन योर कम्युनिटी, सो आप क्या करेंगे, डिफरेंट नेटवर्क्स के हिसाब से आप अलग अलग जगह पे इसको प्रोवाइड करेंगे। सेकेंडली, कोई हाई एलिवेशन पॉइंट होता है या कोई लो एलिवेशन पॉइंट होगा, अपन वहां पे भी इसको प्रोवाइड करेंगे जिससे कि अपन कंट्रोल कर सकें फ्लो। ठीक है। हाई एलिवेशन पॉइंट पे क्यों? क्योंकि वहां पे पानी का प्रेशर कम रहेगा। ओके, सो लेट अस क्विकली राइट अबाउट दिस आल्सो। दीज आर प्रोवाइडेड। मैं भी एक सिंपल सा डायग्राम भी बनाऊंगा जिससे आपकी अंडरस्टैंडिंग और क्लियर हो जाएगी कि वाई दीज आर प्रोवाइडेड एट द summit points or the points of which are higher when compared to their left section and right section. Okay, these points are provided at summit points of the pipe network as the water pressure at the summit point is minimum. समझ गए आप इस चीज को? अब इसकी क्या जरूरत है? रिक्वायरिंग। आपने देखा होगा अगर पानी का प्रेशर आपके नल में किसी दिन ज्यादा होता है बहुत तेज, तो आपको उसको खोलने और बंद करने में ही प्रॉब्लम होती है। सेम कंसेप्ट यहाँ पर है। अगर पानी का प्रेशर ज्यादा होगा, अपने को उस वॉल्व को वर्क फंक्शन करने में प्रॉब्लम होगी, उसकी मेंटेनेंस ज्यादा होगी, उसकी लाइफ कम होगी। सो इट इज प्रोवाइडेड एट समिट पॉइंट so that it requires lower strength of material for these walls. सो अब इसको एक डायग्राम से समझते हैं। लेटस से कि ये अपना एक रिजर्वॉयर है। ओके, और अपने को ये कंज्यूमर अपना यहां तक अपने को इस वाटर को कैरी करना है। सो लेटस से आपका पाइप कुछ इस तरीके से लेड आउट है। ये इसका एलिवेशन दिखा रहा हूं मैं इस डायग्राम से। ठीक है। नाउ गेट वॉल्व, स्लुइस वॉल्व या शट ऑफ वॉल्व अपन ने क्या डिफाइन किया? कहां पे अपन फिट करते हैं? जो समिट पॉइंट्स हैं। आप यहाँ पे आइडेंटिफाई करिए कहां समिट पॉइंट्स हैं। तो मुझे दो जगह दिख रहे हैं, एक तो यहाँ पे, ओके, और एक यहाँ पे। तो मैं इसको नाम रख देता हूं G1 एंड G2। G1 G2 आर गेट वॉल्स। समिट पॉइंट्स पे लगाते हैं फ्लो रेगुलेट करने के लिए। क्यों समिट पॉइंट्स पे लगाते हैं? क्योंकि वहां पे प्रेशर कम रहता है, जिससे अपने को उसकी लाइफ ज्यादा मिलती है और मटेरियल की जो स्ट्रेंथ है वो कम प्रोवाइड करनी पड़ती है। इसी डायग्राम में मैं बाकी के गेट्स ऐड कर लूंगा, सो आप भी इस डायग्राम को बना लीजिएगा। सेकंड डिस्कस करना है अपने को एयर वॉल्स। व्हाट आर एयर वॉल्स? नाउ दीज वॉल्स आर प्रोवाइडेड टू एंश्योर सेफ्टी ऑफ पाइप्स। हाउ? There are two types of valve. Let us discuss about them. One is air inlet valve. ठीक है। Another one is air relief valve.
how it will provide safety. There might be condition that there is a gap between the flowing water. यहां से आपका पानी स्टार्ट हुआ, ठीक है, बट ड्यू टू सम रीजन देर इज अ गैप, ठीक है, एंड बिकॉज ऑफ इट व्हाट हैपन्स, देर माइट बी अ पॉसिबिलिटी कि वैक्यूम क्रिएट हो जाए पाइप के अंदर. अब अपन सबको पता है वैक्यूम क्रिएट होगा, इट विल क्रिएट सक्शन एंड इट विल ट्राई टू डैमेज द पाइप. एयर, ये तो हो गया आपका इनलेट, पानी वैक्यूम हो जाए तो सक करने के लिए. वहीं ऐसा भी हो सकता है कि यहां से आपका वाटर फ्लो हो रहा है, बट यहाँ पे इस एरिया में कोई ब्लॉकेज है जिस कारण से यहाँ पे इस सेक्शन में जो एयर का प्रेशर है काफी ज्यादा इंक्रीज हो गया. अपन ये भी चीज भी नहीं चाहते कि जो प्रेशर है, इंटरनल प्रेशर, वो पाइप पे बहुत ज्यादा लगे. तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पे कुछ ऐसा वॉल्व मैकेनिज्म देंगे जिससे एक्सेस प्रेशर है वो ऑटोमेटिकली रिलीज हो जाए. सो दैट बिकम्स योर एयर relief valve. Let us quickly write some points regarding it. First is that these valves are provided in order to ensure safety of pipes against failures. इनका प्लेसमेंट कहां पे होता है, एक बार प्लेसमेंट अपन देख लेते हैं. आप ये डायग्राम देखिए, मैं इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूं. ये आपका सर्विस रिजर्वॉयर है, यहां से आपको पानी सप्लाई करना है. ओके, अपन जनरली इन एयर वॉल्व्स को जो अपना गेट वॉल्व है उसके आसपास ही लगाते हैं, ठीक है. सो लेट अस से आपको प्रेशर कहां पे क्रिएट हो सकता है, ड्यू टू आपकी हवा अगर एस्केप नहीं हो पा रही है यहां से, लेट अस से यहां से आपका पानी फ्लो हुआ और यहाँ पे हवा एस्केप नहीं हो पा रही है, यहाँ पे हवा सारी प्रेशराइज हो रही है. सो व्हाट विल हैपन, हियर हाई प्रेशर जोन विल क्रिएट. सो व्हाट वी विल डू, वी विल प्रोवाइड अ valve here. Okay, this is your AR. AR stands for air relief. Yes, air relief valve. Okay, secondly, अब आपका अगर वैक्यूम क्रिएट हो रहा है, लेटर से अपन पाइप में आगे चले, यहां से आपका पानी फ्लो हो रहा है बट पीछे से सप्लाई नहीं आई, किसी भी कारण से ब्लॉकेज हो गया, वॉल्व में कुछ इशू है, कोई भी कारण हो सकता है. सो व्हाट विल हैपन, अगेन इस एरिया में वैक्यूम क्रिएट हो सकता है जो इस सेक्शन ऑफ पाइप को डैमेज कर सकता है. अपन ये नहीं चाहते कि किसी भी तरीके से पाइप्स डैमेज हो. सो व्हाट विल डू, we'll provide a valve here and we will provide a air inlet valve. तो मैं इसको भी यहां पे लिख देता हूं, AI represents air inlet. ओके, सो एयर रिलीफ वॉल्व आप समझ गए, एयर इनलेट वॉल्व समझ गए. एक बार इसी बात पे आप अपनी नोटबुक में अपने डायग्राम बनाया होगा, तो ये सेकंड पार्ट के लिए आप बताइए कि कहां पे कौन सा वॉल्व लगेगा. अपने को दो वॉल्व लगाने, एक लेफ्ट साइड में, अनदर वन ऑन राइट साइड, ठीक है. कौन सा वॉल्व किस जगह लगेगा, यहां पे आपका प्रेशर बढ़ सकता है लेफ्ट साइड में, तो अपन यहाँ पे रिलीफ वॉल्व लगा देते हैं, और लेफ्ट साइड में वैक्यूम क्रिएट हो सकता है, तो अपन चाहते हैं एयर कहीं से मिल सके पाइप को, तो अपन एयर इनलेट वॉल्व लगा देंगे. ओके, सिंपल. So let us quickly write about their position. They are placed at summit points on either side of gate valve. Okay.
एक बार लिख लेते हैं जो पॉइंट अपन ने अभी डिस्कस किया कि इनका प्लेसमेंट किधर रखते हैं, लेफ्ट साइड में, राइट साइड में, या फिर पोजीशन के हिसाब से, एलिवेशन के हिसाब से। आई एम यूजिंग द शॉर्ट फॉर्म एयर इनलेट के लिए AI valve is provided on downstream, and AR, short form for air relief, and AR valves are provided on the upstream side of the gate valve. Okay, so these were two things with regards to air relief and air inlet valve. Next, third one, we have drain valve. We can also term it as score valve or blow off valve. Based upon the book you are referring, different terms might be given here, but all of these have the same meaning. Okay. Now, as the term suggests, drain, scar, blow off valve. Okay. So why are they used? These valves are used. These valves are used to drain any amount of excess water that might be present there. कहाँ पे हो सकता है excess water? At the lower most part of the section. फॉर एग्जाम्पल मुझे यहाँ पे एक लोअर मोस्ट पार्ट दिख रहा है, तो आई विल प्लेस अ ड्रेन वॉल्व. ओके, what does it ensure? It ensures that the flow in the pipe is due to the action of gravity only, and there is no excess of pressure in it. Okay. Secondly, if we need to clean this pipe, let us say there might be deposition of certain amount of silt or sand at the bottom part of these pipes. So what we can do, we can provide a high pressure at the upstream. We can allow that pressure. We can open this drain valve. As this drain valve is opened, the entire silt and everything will be washed off. The pipe will be cleaned by itself. So these are a few points with regards to drain, score, or blow off valves. Let us write them quickly. So these valves are used to drain the water out from the pipe system. Second important point, that they are placed at lowermost point. Why at the lowermost point in the pipes? So as to ensure gravity drainage. Okay, gravity drainage का मतलब है drainage due to action of gravity. Okay, लोएस्ट पॉइंट पे लगाने का फायदा क्या है? आपके लेफ्ट साइड से भी वो हायर एलिवेशन से पानी ड्रेन हो सकता है. यहाँ पे लेटर से ड्रेन वॉल्व है आपका. इस तरफ जो पाइप अटैच्ड है, स्क्रीन पे देखिए, ये आपका वॉल्व है. आपका पाइप यहाँ पे अटैच्ड है, यहाँ से जा रहा है. दोनों तरफ एलिवेशन ज्यादा है, ये लोएस्ट एलिवेशन है. सो जो सिल्ट यहाँ पे डिपॉजिटेड है, सिल्ट यहाँ पे डिपॉजिटेड है, इस ड्रेन वॉल्व को खोलने पे वो सारा क्लीनिंग पॉसिबल है. ओके,
also used to clear the silt. Okay, these are a few points with regards to drain, score और blow up valve. Okay, नाम याद रखिएगा. नाम में कंफ्यूजन होता है जब एग्जाम में आप रिवाइज करके नहीं जाते हो. यूनिवर्सिटी एग्जाम हो, कॉलेज के सेमेस्टर का एग्जाम हो, वाइवा हो लैब का, या फिर आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, गेट का पेपर हो, आपको ऐसे ही कंफ्यूज करते हैं. यही कंपटीशन होता है. जिस बच्चे को याद है, जिसने रिवीजन टाइमली किया है, अपने नोट्स अभी बना रहा है, वो इसमें कंफ्यूज नहीं होगा. ओके, नेक्स्ट डिस्कस करते हैं. नेक्स्ट वॉल्व, चेक वॉल्व, रिफ्लक्स वॉल्व और नॉन रिटर्निंग वॉल्व. लिख लीजिए, हेडिंग लगा लीजिए. ओके, सो as the name suggests, check valve and non returning valve. नॉन रिटर्निंग का मतलब रिटर्न ना हो. सो वेयर विल बी प्लेस, वी विल ट्राई टू प्लेस दीज वॉल्व्स वेयर वी विश दैट द फ्लो रिमेन्स इन सिंगल डायरेक्शन. ओके, सिंगल डायरेक्शन में फ्लो रहना चाहिए. दोनों डायरेक्शन में अपन नहीं चाहते फ्लो हो, तो ये दूसरे डायरेक्शन से अगर फ्लो होता है तो ये उसको अपोज करेगा. ओके, कहाँ पे ये सिस्टम्स यूज करते हैं, कहाँ पे वॉल्व यूज करते हैं? जनरली अपन जैसे आपके घर में पानी की मोटर होगी, जो ग्राउंड में जो आपके वाटर टैंक है, वहां से आपके जो छत पे वाटर टैंक है उसमें पानी फिल करती होगी. आप नहीं चाहते कि पानी उल्टा फ्लो हो जाए, तो अपन वहां पे एक चेक वॉल्व या नॉन रिटर्निंग वॉल्व या रिफ्लेक्स वॉल्व लगा लेते हैं, जिससे पानी वापस रिटर्न नहीं होता, सिर्फ एक डायरेक्शन में ऊपर की तरफ चढ़ता रहता है. ठीक है, इन केस कोई भी फेलियर हो, पानी उसमें आपका बैक फ्लो हो जाए ड्यू टू ओवरफिलिंग और ड्यू टू एनी ऑफ द रीजन, सो इट doesn't allow the flow from the other side, it allows the flow from only one side. Okay, let us quickly write about it. We will also draw the simple diagram. These valves are used to check as they allow the flow of water from one direction only, or the flow of water only in single direction. Let us consider a situation. This is your water tank. The water needs to be pumped. ये आपका पंप हो गया. एंड फिर आपको इसको एक हायर एलिवेशन पे ले जाके ओके so where will we be providing this check valve? At this location. Okay, मैं CV लिख रहा हूं. CV stands for check valve or reflex valve or non returning valve. Okay, this is the convention followed. It is provided on the delivery side of the pump. Okay, दूसरी साइड पे, इस साइड पे सक्शन साइड ऑफ द पंप पे प्रोवाइड नहीं करा जाता है.
Okay, please draw this diagram quickly and also write this point that these walls are provided at the delivery side of pump. Okay, I hope you have done this. So what are all the things that we have discussed in today's lecture? We discussed about design life of different units with regards to water treatment plant. We'll be going in much in detail about them as and when these terms come in the treatment section. We also learned about different types of pipes. आपने पढ़ा कास्ट आयरन पाइप क्या होता है, स्टील पाइप्स कहाँ यूज होते हैं, कहाँ यूज नहीं होते हैं, एस्बेस्टोस पाइप, आरसीसी के पाइप्स, गैल्वेनाइज्ड आयरन के पाइप्स कहाँ यूज होते हैं, कहाँ यूज नहीं होते हैं. देन आपने वॉल्व्स के बारे में पढ़ा, गेट वॉल्व क्या होता है, कैसी फंक्शनिंग है, वेयर इट इज यूज्ड, what are air inlet valves and what are air relief valves, where they are provided, at the summit points, near the gate, what is the purpose, we have studied. Okay, next we have studied about check valve or non-returning valve. We have learned about drain valves. Okay, we have learned a lot of things today, and with this I will be ending today's lecture also. Okay, in the next section we will be learning about the distribution system. What are different types of distribution network systems that are available to us, when we use which type of system, we'll learn. We'll also move on practicing some of the numericals and understanding the concepts of demand forecasting, how water demand for a particular city or a particular community is calculated, how it is forecasted. Okay, if you have any of the queries, please join the Telegram group. I again request you join the Telegram group. It is in the description box. The link is given there. Click on it, join the Telegram group, post your queries there. You can post your queries directly in the comments box also. We are continuously monitoring the comment section also, as a lot of students are viewing us, and we really appreciate your support, and we assure that we'll be providing the quality content as we have promised. On behalf of all the civil engineering tech faculties also, I assure this thing to you. So I hope you appreciate our work, appreciate our efforts. If you liked today's class, then do hit that like button, and to get the continuous update, definitely press subscribe button and the bell icon. So that's all for today's class. We'll see the topics that I have just mentioned in the next lecture tomorrow. Till then, have a good day. Take care of yourselves. Jai Hind.